बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले कंटूर इंटीग्रेशन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मिसबा खालिद की बुक हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो मेंशन फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, इसमें आप ये फर्स्ट देखें, टाइप 1 देखेंगे और 0 to x इंटीग्रल f साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। टाइप 2 where f is a rational function of sin and cos। फॉर्म ऑफ इंटीग्रल विल बी, टाइप 2 क्या हो जाएगी, इंटीग्रल की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है। और ठीक है, टाइप 3 फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इज पी एक्स बाई क्यू एक्स माइनस इन्फिनिटी सी से प्लस इन्फिनिटी तक साइन एम एक्स डी एक्स। और ये यही चीज़ कॉस में हो जाएगी। और लिमिट इसमें इस पे पी ऑफ क्यू ओ पी और क्यू ऑफ एक्स जो है ना पोलिनोमियल ऑफ एक्स होंगी। डिग्री ऑफ क्यू एक्स एक्सीड इन द डिग्री ऑफ पी एक्स है। द इक्वेशन क्यू एक्स इक्वल टू हैज़ नो रियल रूट्स आ जाएगा। व्हाट इज जॉर्डन इनइक्वालिटी, टू थीटा और थीटा के दरमियान साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 2 थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। ठीक है, फिर पाई बाई टू थीटा बाय पाई हो जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के दरमियान होंगी। बट इज ए जॉर्डन लेमिना। इसमें जॉर्डन लेमा देखें, इस एफ ऑफ जी इज ए कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज टेंड्स टू 0 यूनिफॉर्मली एज z goes to infinity and f of z is memomorphic in the upper half plane, then e की पावर imaginary z f of z is equal to 0। ये c है लिमिटिंग वैल्यू r goes to infinity और where c denote the semicircle z mod is equal to r image of z greater than 0। What is the indentation process? When the complex integral does have a simple pole on the real axis, we draw a semicircle C1 in the upper semiplane with its center at the pole and the radius E ultimately tends to 0. This process is called indentation. Write the form of the type 4. Form of integral is f of x sin of m of x और cos of m of x dx माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, या फिर 0 से इन्फिनिटी तक हैगी साइन एम ऑफ एक्स और कॉस एम ऑफ एक्स डी एक्स से है। ठीक है, इन टाइप 4 इफ द इंटीग्रल हैज़ नो पोल ऑन द रियल एक्सिस देन इट रिड्यूस टू टाइप 3। Write type 5 of contour integration. Case when the pole lies on the negative part of a real axis. Form of integral is x की वैल्यू अल्फ़ा माइनस 1 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी या 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स where alpha is a fraction non integral. Case 2 when the pole lie in the positive part of a real axis. Form of an integral is x की वैल्यू अल्फ़ा माइनस 1 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी, ये इसी तरह इन्फिनिटी में आ जाएगा। इसमें अल्फ़ा माइनस 1 है, इसमें अल्फ़ा आ जाएगा वेयर अल्फ़ा इज़ ए फ्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन ऑन एनालिटिकल continuation. State Mittag-Leffel expansion theorem. Let f of x be a meromorphic function whose only singularity in the finite part of a plane are simple pole at a1 an which can be arranged as 0 से an तक which residue b1 से bn respectively. Consider a sequence of a closed continuous c1 से cn encloses a1 an and no other poles. The minimum distance rn of cn from the origin tends to infinity where n goes to infinity, and for all value of the expect poles f of 0 sigma की वैल्यू b of n 1 by z minus an plus 1 by an मॉडुलस वैल्यू f of 0। और ये टर्म्स सेकेंड टर्म
इक्वल क्या हो जाएगा एफ ओ सी स्टेट वेस्टर्न फैक्टराइजेशन थ्योरम इफ एफ ओ सी इन entire function have 0 at a1 an a1 modulus less than a2 modulus less than a3 an f dash of 0 divided by f of 0 z where f of z is equal to f of 0 e और पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी का 1/z डिवाइडेड बाई ए एन e की पावर z divided by an. Do there exist some entire function which have no finite value of z? If yes, give example. Yes, f of z is equal to z. Define analytical continuation. f1 z be analytic in a domain d1 and suppose that we can find a function f2 of z which is analytic in a domain d2 such that d2 has the part E in the common with D1. If f1 of z, f2 z in the common part of E, then we say the f of 2 z is the direct analytical continuous of f1 of z from D1 into D2, while E or frequently f of t is a direct analytical continuous of f1. Does the uniqueness of a direct analytical continuous exist? Yes, there are cannot be two different direct analytical continuation of a function. Give an example of a analytical continuation. The function f of z is equal to 1 by a plus z by a square plus z2 by a3 z3 by a4 plus so on can be continued analytically. State monotony theorem. Any arbitrary function w बराबर f can be continued analytically along very possible path laying in a simple connected domain which contain a counter c have a point z is equal to 0 further the resulting function is a single value. If a function f of z be analytical continuous along every path in a simply connected domain, then the resulting function is a single value. Define natural boundary. If a function f of z has all the singularity on the boundary of a region and the function cannot be extended analytically beyond the boundary of a region, such that boundary is called a natural boundary. Give an example of a natural boundary circle of a conversion of a power cg1 plus z2 plus z4 so on is a natural boundary. Give an example of a natural boundary unit circle z mod is equal to 1 is a natural boundary of the power sigma की power 0 से infinity z की power and is equal to f of c. Conformal mapping. Define conformal isogonal mapping. C1 C2 curve in a z plane and alpha is the angle between them. W बराबर है f of z भी under that transformation C1 dash and C2 dash be the two image curve in the W plane and B is the angle between them. Alpha is equal to beta in a magnitude and direction. Then the transformation is called conformal. U से U dash, V से V dash, X X dash, Y dash. W plane or Z plane. Alpha and B are equal in magnitude but the direction is not preserved. Then the transformation is called isogonal. A W plane or Z plane. Give an example of a non-conformal mapping. W बराबर है Zn where Z is equal to RE iota. Theta mapping is not conformal. What are the critical point of ordinary point? The point where f dash z is equal to dw by dz is equal to 0 or infinity are called the critical point, and the point where f dash z is equal to dw by z is equal to 0 are called the ordinary point. Define linear transformation of w बराबर a z plus b where a and b are the complex constant and a property 0 called a linear transformation. Does a linear transformation from a conformal mapping? Yes. Define Mcqs transformation. The transformation d defined by w बराबर t z बराबर a z plus b c z plus d. A b c are complex constant and a d minus b c बराबर 0 is called a linear or linear fractional or Mobius transformation. Or who was Mobius? Mobius is a French mathematician, was the first who situated linear transformation. What is the inverse transformation? The inverse of transformation T inverse is defined as d बराबर है T inverse W minus D. W plus B C W minus A is in a bilinear transform. What is the determinant of a transformation? The constant AD minus BC is called the determinant of the transformation. Define normalized transformation. AD minus BC is equal to 1. Then the bilinear transformation is called normalized. A bilinear transformation is one transformation if
W बराबर है टी जी ए जी प्लस बी सी जी प्लस डी। A binomial transformation is AD minus BC is equal to the binomial transformation is called normalized. A binomial transformation is one transformation if dash in W बराबर TZ AZ plus BCZ plus D where A B C D are the complex rounds AD minus BC is बराबर नहीं है 0. That is the biuniform transformation. A transformation is a biuniform for the whole plane of a Z and W and its preserve angle both in magnitude and direction. The product of any finite number of bilinear transformation is also a bilinear transformation. The set of bilinear transformation from a non-billion under the product of transformation which of them are true. ये true आप देख लें. Bilinear transformation can be uniquely determined by the three pair of a pollets. अब second भी true है. A bilinear transformation maps circle or a straight line into circle or a straight line. What are the fixed point of a transformation? The point which coincide with their transfer under the bilinear transformation are called the fixed point of a transformation. What is the normal form of a bilinear transformation? Every bilinear transform reaches to finite fixed point alpha and beta can be put in the form of W minus alpha W minus beta is equal to K Z minus alpha Z minus beta, which is known as the normal form. When the transformation will be elliptical, it is a transformation has two distinct fixed points, say alpha and beta, then the transformation is said to be elliptic. When a transformation will be hyperbolic, if a transformation has one of two fixed point at infinity, then the transformation is said to be hyperbolic. When a transformation will be parabolic, if a transformation has only one fixed point, then it is called a parabolic transformation. Which of them are true? Wedges are the map into wedges by the transformation W बराबर Z B by alpha. Wedges or sector are mapped onto half plane by the transformation W बराबर है Z 1 by alpha. Circular crescent are mapped onto wedges by the ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर है लैम्डा Z माइनस ए और Z माइनस बी. थर्ड भी फोर्थ भी देख लें. फैक्ट फॉल्स है. गिव सम एग्जांपल ऑफ ए हार्मोनिक फंक्शन. Harmonic function play important role in applied mathematics. For example, the temperature in their plates which have no heat source or a sink and hold thermal properties do not vary from point to point in xy plane are harmonic also. Define Vxy when it denotes the electrostatic potential which is free of charge is also harmonic. Define harmonic conjugate. If two functions u and v are a harmonic in a domain D and the first order partial derivative satisfy the Cauchy-Riemann equation throughout D, then V is said to be harmonic conjugate of u. Write legendary polynomial. Pnx is equal to 1 by 2 n factorial dn dx की power n x2 minus 1 की whole power n. नोट 0 पी नोट एक्स 1 नोट 1 क्यू पी 1 एक्स इज इक्वल टू एक्स एन 2 की वैल्यू में ये आंसर देगा. एंड सो व्हाट आर द लेजेंडरी फंक्शन 1 माइनस एक्स वाई की पावर डबल माइनस 2 एक्स वाई प्लस एन एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0. सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन लेजेंडरी फंक्शन ऑफ ए ऑर्डर एन. राइट द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आंसर है. ये डबल डेरिवेटिव वाई डैश और वाई खाली और इसके साथ ये सम ये आ जाएंगी वैल्यूज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल 2 एक्स से और एन प्लस 1 इसका लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद रियल एनालिसिस आ जाता है. ठीक है, ये एनालिसिस और नेक्स्ट आप देख लें कि आप कौन सा आगे मज़ीद स्टडी करना चाह रहे हैं. शुक्रिया बहुत.